Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. How are you all? Fine, Fine. ma'am. How are you? Okay, I'm absolutely fine, Becca. How was your exam? Ma'am, easy and fine. You seem fine because of MCQs only, right? Yes, ma'am. Okay. So in term one, we are going to take computer subject paper also. There will be 15 marks paper. Syllabus will be from chapter 1 to 6. Okay. So anyhow, we have to complete 6 chapters. Right? Now, today we are going to do exercise of chapter number 4 and we will start chapter number 5. Okay. So, let's start exercise of chapter number 4. Everyone have a textbook? Am I audible properly? Hello? Hello? Yes, ma'am. Yes. So, let's start exercise of chapter number 4. Ma'am, we have done. Exercise. Exercise. Oh, beta. It's remaining. Of chapter 4. Ma'am, chapter 4 question C is remaining. On the C section is remaining. ओके अच्छा लास्ट सैटरडे हमारा पीरियड आया था ओके सी सेक्शन मार्क 2 अच्छा 2 and 4 just been read by Soham Jineria. Will you please read this to us? Soham, are you here beta? Yes, ma'am. Will you please read this to us? Ma'am, which page number? Page number 48. Have we started this chapter number 5 buttons and all? हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर दिया था हेलो No, ma'am. Ma'am, we had done till नहीं किया था क्या ma'am, we had done till creative symbols.
Using symbols and flash. You have done this chapter? No, ma'am. Till page number 50. Page number 5050. Yes. Suno. Ma'am, on page number 56 now. No, 48 page number. Are you able to find this? Hello? Ma'am, can I start? Hanji, please. Or instead it can not have properties different from the original symbol. बेटा आपको पेज नंबर 48 पे रीड करना है तो 46. Yes. Sorry. First, chart can only be created on the same sheet as data. પેજ નંબર કેટલામાં છે? 43. So the answer is discussed in last class, so read this all. વાત કરે 48. यही पोर्शन बाकी था ना स्टूडेंट? है ना? क्या मन क्या देखा तो नहीं. मेलविन, बेटा आप कौन से क्लास में हो? मेलविन, Yes, ma'am. you are in which class बेटा? आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? First तो बेटा जो 7th स्टैंडर्ड का क्लास है आपको ये लिंक ज्वाइन नहीं करनी है. अभी शायद कोई और सब्जेक्ट का पीरियड होगा. आपका टाइम टेबल प्रॉपरली चेक कीजिए. ठीक है? Okay, ma'am. Vishwas, you have done it. Okay. Vishwa, have you done that true false which is given on page number 38? No, ma'am. Okay. Soham, are you here, beta? Hello? Hello? Soham? Yes, ma'am. Ma'am, continue करूँ? If he is not available, then London. London. Start reading this word. Yes, ma'am. Start reading this first. This is given on page number 38.
Yes, ma'am. Chart can only be created on the same sheet as date. Hello. False. Ma'am, false. Started. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's done, beta. Yes, ma'am. Page number 48 also done. Okay. See, first one is false because charts can only be created on same sheet as data. No, we can create it another sheet also. Right? Next is clustered column chart has a horizontal bar. No, it has a vertical bar. Right? Next is true. Fourth one is also true. Fifth one, clustered bar chart has a vertical column. It is also false because it has a horizontal column, which we already done in last to last period, right? A chart once made cannot be changed to other types. No, we can change it in other types also, right? Now let's start chapter number 5, using symbols in Flash. In next week, I'm going to share link of the Flash. How can you install it from the Google, right? So today we are going to learn about symbols. Can anyone tell me how many types of symbols are there? Ma'am, can I? Anji, So, Ma'am, there are graphic three. symbol, button symbol, Anji, and movie symbol. Anji, can you tell me what is the meaning of graphic? Ma'am, graphic मतलब video और Video clip. No, ma'am. They are full animation. Gee, we already learned about this. Graphic means it is non-moving image. It is not animation. It is static image only, picture, right? If we talk about the button symbol, then it is a very interesting topic we are going to learn today. Button symbol in this, there are some click events we will generate and that we will do it today only. Next is movie clip symbol. By using this symbol, you can create animation, and then for further use, you can save it in your Flash CSV Professional. Let's start how to create symbols. First one is graphic symbol. How to open this? I already pinned this on taskbar. So again and again, I don't have to go on start button. I'm just clicking on this. Okay, this is the screen of the Flash CSV Professional. I'm just clicking on this, and then are you able to see my screen properly? Let me do brightness more so you are able to see properly. Yes, ma'am. Okay, fine. Right? So whatever work we have to do, Hanji. बेटा नहीं नहीं दिख रहा है? What you are not able to see, screen or else? मैम ब्लर आ रहा है मतलब कंप्यूटर ब्लर हाँ, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा because
ये जो डेस्कटॉप में यूज कर रही हूँ उसमें कैमरा नहीं है, so that I cannot use FCC in the computer. If I have laptop or good desktop, then I can do it. Right? Screen is already given in your textbook, don't worry, right? So first of all, to create a graphic symbol, I have to import one image in this. So there are two options. First one, you have to go on file option. Once you click on the file option, you can see import option is there. From this, you can import to stage. Here shortcut key is written. Are you able to see what is the shortcut key to import any image in this on the stage? Control R, which is given in your textbook also, first step. So I'm clicking on this. Once I click on this, you can see whatever images are available in your computer that you can access. Let me go in pictures. I'm going in pictures, and then there is no good image on picture. Let me show in the laptop. Lotus symbol, yes. I'm choosing any image and then opening it here. Are you able to see it imported? Right? Suppose if you want to do any changes in this, then you can. Suppose if you want to change the size of this, then you can change it from here. One option we have to select first of all. Where it is? Yes, this one. Free transform. Right? Then suppose if you want to write any text in this, then you can write it here. Right? Now if you want to use this object if you want to save this object for the further use, then you can save as a graphic. See, I'm just selecting this image. I'm going in modify option. Once I click on this, you can see second option is there. Convert to symbol. Shortcut key of this is F8. Symbol 1. I'm just changing the name of this my graphic. Right, and choosing graphic option and then okay. Once I click on this, you can see my graphic करके एक ग्राफ बन गया है. Right? जो मैंने import की थी वो ऐसी image थी. I modified that graphic. I added star in this. Now if I want to use this graphic anywhere, anytime, then I can use this. It's a very simple, isn't it? Understood this? Everyone, let me take new flash file. Just clicking on this. Once I click on this, you can see new stage is appear here, screen 1. And here you can see the scene. Steps to create a button symbol. First of all, to create a button, I'm just making one button by using rectangle. I'm just drawing rectangle here and then writing something there by using text tool. Button. Right, and dragging it from there to here. Changing the color of button font. Is it visible to you? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Simple. आपको समझ में आ गया? However we work in the same things we are doing in this only. Then select this button, modify it, convert to symbol. From this you have to choose button here. And for easy to access, we are going to give name my button. Okay, and clicking on OK. Once I click on OK, you can see my button. It appears in the library, right? Now I'm going to click on the button. Are you able to see this timeline? Right, concentrate here. I'm just clicking. I'm just doing double click on this.
Once I click on this, you can see up, over, down and hit. These 4 options are available there. What is the use of this option? Why these options are appear here? It's not appear in graphics. Because we choose button and there are some button events which is given in this software, right? Now I am just clicking on over, doing right click and then insert keyframe. Once I click on this, you can see whatever changes you want to do that you can do by doing double click, right? I am typing here over, O-V-E-R, over, then changing the font style, blue, and if I want to change this background, then I can change it from here. I choose blue color, so yellow and blue combination is look good, contrast. Are you able to see this? Understood, everyone? Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. I am repeating this again in down. Just click on down option, down of the down option, and then insert keyframe. Once you click on this, you can edit this button. Once you click on this, you can edit this down. I'm changing the font color. Which one? Dark blue. It was already blue, I guess, right? So changing black. Okay, and this background I'm choosing this color, right? Now I'm executing this. To execute this, we have to click on Control Enter, right? But before we do any click event, read this on page number 52. This will read by Radhika Shundra. Will you please read this portion? Page number 52, up, over, down and hit. Hello? If you speak may I, then I cannot recognize your voice. I am not artificial intelligence. You have to tell your name. Who want to read? Adya, I guess. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hanji, start reading, beta. Here, huh? Are you able to see my textbook? Ma'am, from up. Ma'am, from up. Hanji, yes. Absolutely correct. Up. Up is the button appearance when the user's mouse pointer. अच्छा, Over mouse is the button button. pointer is not on it. जब वो उसके ऊपर नहीं होगा, at that time it will show you up. Next. Over is the button's appearance when the user's mouse pointer is over the button. Okay. Over button के ऊपर होगा तब. Next. Down is the button's Down. appearance when the user's mouse When pointer is over the button and it is Click. used to define the boundary of the area that will respond to mouse click. Okay, thank you so much, beta. So here I'm again repeating, to execute this program, I have to click on Control Enter. Once I click on Control Enter, you can see which button we prepared, that you are able to see. If I drag my mouse near the button, then over is appearing, and if I click on this, then down option is there, right? Getting everyone? जैसे आद्या ने रीड किया कि अगर हम अप, उसके अप हो, अप का मीनिंग होगा कि माउस पॉइंटर अप नहीं है, राइट?
ओवर का मीनिंग होगा कि माउस पॉइंटर उसके ओवर, अगर हम ओवर ले जाते हैं उसके ऊपर तो। देन डाउन का मीनिंग ये है कि इफ यू क्लिक ऑन दिस, अगर वर्ड हम समझे तो डाउन इट मीन्स बटन के नीचे कर्सर हो, पॉइंटर हो, तो फिर वो अपीयर होना चाहिए, बट दे यूज डिफरेंट डेफिनेशन इन दिस फॉर द डाउन एंड अप एंड ओवर, राइट? सो अगर आपको डाउन बटन चाहिए देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस. Are you able to see changes? My pointer is here now. Now I am going on button and clicking on this, then down is appear. Everyone understood this much? Yes, ma'am, but my that flash is not open. What? Flash? Ma'am, my flash is not opening. Have you downloaded it? No, ma'am. Then you have to download this from the Google. ठीक है, अगर किसी के पास सेटअप है तो आप ले सकते हो. नेक्स्ट वीक आई विल शेयर द लिंक, राइट? Now next is adding sound to button, but this option is not working in this computer because these computers are in sharing, and if I import any sound in this, then it's too big file, so it's not load in this, so I'm going in another computer. But before this, let me explain steps to create a movie clip symbol, which is given on page number 54, right? So can anyone read this movie clip symbol are? Khushi Kundaria, will you please read this? Hello? Khushi, are you here, beta? Khushi? Khushi, your voice is not coming. You are not audible. Acha, hers is also here. Hers, will you please this? If you have a network problem, you can reply in chat box. हाँ जी बेटा. Ma'am, sorry, I have network problem. Okay. Dhruv Jetloja. Hello, ma'am. हाँ जी, हाँ जी, you are audible. Who is he? Ma'am, Harsh. Harsh. Okay. Promotion? What? Nothing. Start reading from here. Okay. I'm from steps to create movie clip. Yes. Exactly. Okay. Movie clip symbols are reusable flash animation. They are flash movies, not flash movies. They have their own timeline that plays independent of the main movie's timeline. Movie clip symbols can be controlled with keys. You can change their dimensions, color, and their you can duplicate or delete them. ओके, थैंक यू सो मच. बस इतना ही रीड करना था. तो अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो एनिमेटेड कोई भी पिक्चर हो, उसको हम एग्जैक्टली पिक्चर नहीं बोलेंगे, बट पिक्चर हो उसमें कुछ एनिमेशन रखा हो, जैसे कि उसका कलर चेंज हो, जैसे हमने स्क्रैच में किया था, बटरफ्लाई का कलर चेंज हो रहा था, राइट? या फिर उनका कुछ एनिमेशन ऐसा हो कि वो डायरेक्शन उनकी मूव हो रही हो, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में वो लोग जा रहे हो, राइट? इस टाइप का कुछ भी एनिमेशन आपने प्रिपेयर किया है तो फिर वो एनिमेशन आप मूवी क्लिप सिंबल में ऐड कर सकते हो एंड फर्दर यूज के लिए आप यूज कर सकते हो. लेट मी शो यू.
एडिंग न्यू. मैम हाँ जी, न्यू एंड देन. हाँ मैंने बेटा, बनाया है तो मैं आपको किसने बनाया है? देव ने. क्या बनाया? क्या बनाया है आपने? मैम मैंने एक क्लिप बनाई है. किस में बनाई है? किस में बनाई है? कंप्यूटर में, वो तो पता है, बट कौन से सॉफ्टवेयर में? मैंने वो उसका नाम पता नहीं है लेकिन नाम पता नहीं है. अच्छा अच्छा, आप अभी कंप्यूटर पे बैठे हो? नहीं मैम क्या अभी doing? तो You are doing work in computer now? No? Okay. So let me explain this movie clip symbol. I require only 2-3 minutes. तब तक आप अपना कंप्यूटर ऑन करके मुझे दिखाना. कंप्यूटर ऑन कर लीजिए, फिर दिखाना. So I am just clicking on this file option. From file option import, and from import to page. Let's use this time shortcut key. Control. What is the shortcut key to import any image? Control R. I'm clicking on Control R, and then I'm using. Let me download good animated picture from Google. I'm going to download GIF image. Can anyone tell me what is the meaning of GIF? Which kind of file will show you computer when you tell GIF at the time? किसी को पता है? No one? What is the extension of simple images? हम जो ये हमारा पिक्चर वगैरह, फोटो वगैरह खींचते हैं कैमरा वगैरह में, उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? किसी को पता है? हेलो. अगर आप वो पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो भी आपको वो दिखाएंगे प्रॉपर्टीज में. चलिए चेक कीजिए, आपके मोबाइल में कुछ इमेजेस पड़ी हो, आपके पर्सनल पिक्चर्स या कोई भी इमेजेस. जस्ट डू राइट क्लिक, सी इन प्रॉपर्टीज एंड चेक व्हाट एक्सटेंशन इज देयर. Who is doing this? Suhani. मैम they give information. क्या बेटा? Can this so that the import. I'm not getting your voice properly. Are you getting my question? Are you getting my question? Suppose I have many images in my computer, right? So I'm just doing right click and go in properties. Once I go in properties, you can see type of file .jpg. This is the extension of this file, right? So normally सारी इमेजेस JPG या JPEG फॉर्म में होती है, उसका एक्सटेंशन. अभी मैं GIF इमेज आपको दिखाती हूँ. GIF it means animated. Clicking on this, are you able to see? It's moving. Just doing right click, save image. I'm saving this image on desktop, circle 3, and then giving OK. Right? 1 minute. Circle 3 can't be downloaded. Discard this. I'm not able to download this. Let's try another image. This is not GIF image because it is not. No, this is GIF image. See, थोड़ी देर के बाद एनिमेशन आ रहा है, मतलब टाइम में उन्होंने एनिमेशन नहीं दिया है. Save images, download, and then OK. Right? Now, again I'm going on Flash, just clicking on this,
simple Control R, downloads, and this image. This image I am selecting from that here. ये मैंने रेडी में इमेज गूगल से डाउनलोड करके ली है. अगर आपको ये इमेज एनिमेशन क्रिएट करना है, सपोज मैंने जैसे स्टार लिया था इसमें, तो वो स्टार में कलर अंदर चेंज हो, ऐसे टाइमलाइन वगैरह में फिक्स करना है, देन आई कैन डू इट. Are you able to see this timeline? ये सारी की फ्रेम है. देखिए मैं एक बार यहाँ से क्लिक करूंगी तो वो रोटेट हो रहा है. ठीक है, तो ये अगर आपने क्रिएट किया है फ्लैश में, एंड अगर आपको वो फर्दर यूज के लिए चाहिए, सपोज आप कुछ और बना रहे हो, उसमें ऐड करना है, देन यू कैन एड इट. कितनी फ्रेम्स है? 100 फ्रेम्स. ओ 100 फ्रेम्स की अलग अलग इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं. आर यू एबल टू सी दिस स्मॉल स्क्रीन? ठीक है, अब ये सारी फाइल्स कैरी करना पॉसिबल नहीं है, तो बीच में 100 फाइल्स है. सो दिस ऑल फाइल्स वी कैन नॉट कैरी ऑल टाइम, राइट? सो हियर इज वन ऑप्शन, मॉडिफाई, कन्वर्ट सिंबल. Shortcut key of this is F8. Once you click on it, F8, you can see 3 types are there. From this, you have to choose movie clip. Once you click on this, they are asking you to give name. So I am writing my movie clip. Okay, and giving OK. Once I click on this, you can see ये एक फाइल है जिसके अंदर ये सारे बीट में 100 जितने बीट मैप से दूसरा बाहर. गॉट इट? अगर मैं ये सारे डिलीट भी कर दूं तो भी चलेगा. ठीक है, नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन माय मूवी क्लिप एंड जस्ट गिविंग फुल एंटर टू सी एनिमेशन. Have you understood exactly use of movie clip? अगर आपने कुछ भी एनिमेशन क्रिएट किया है, सपोज आपने रेक्टेंगल क्रिएट किया है, वो रेक्टेंगल के अंदर I'm again repeating this, F8. Sorry, Control Enter, F8 I already done. I already saved this clip. It's taking too much time to export, see, because it's too big file. देखिए सिर्फ इतना सा एनिमेशन के लिए उन्होंने 100 इमेजेस यूज की थी. ये क्या है पता है? अलग अलग 100 इमेजेस है, एंड उन्होंने 1 बाय 1 एक इमेज सेट करके फिर उनको टाइमलाइन में टाइमिंग दिया हुआ है. अंडरस्टूड? अगर आप थोड़ा क्या कैमरा थोड़ा फोन अप करो, पीछे करो, फोन पीछे करो, ऐसा नहीं मैम, ऊपर. ओके, ऊपर तो विंडो है. समझ में आ रहा है? आपने अगर नोटिस किया हो तो कोई फेस्टिवल हो तब व्हाट्सएप में ये फैक्ट्रीज वाले वगैरह स्टेटस, बिजनेस वाले वगैरह स्टेटस रखते होंगे. यस मैम. ठीक है, वो कभी कभी स्टैटिक भी होता है, कभी कभी डायनेमिक भी होता है, लाइक एनिमेटेड वीडियो हो उनका, तो वो ऐसे ही बनाते हैं. वो जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम है आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर. उसमें आप ऐसी एनिमेटेड फाइल बना सकते हो. वो भी ये एडोब फ्लैश, मैंने आपको बताया ना, एडोब फ्लैश CS3 प्रोफेशनल, वो भी एडोब आफ्टर इफेक्ट ऐसा उसका नाम है. तो ये इनके रिलेवेंट ही है. अगर आप 7th स्टैंडर्ड में हो तो डायरेक्टली यू कैन नॉट लर्न दैट सॉफ्टवेयर. सो दे आर प्रोवाइडिंग बेसिक थिंग्स इन दिस. इसमें आप इतना ज्यादा वर्क भी नहीं कर सकते. अगर मुझे
कोई सॉन्ग इसमें इंपोर्ट करना है तो वो भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। ये स्पेशली लर्निंग के लिए ही बनाया हुआ है, ताकि अगर आपको फर्दर ये फील्ड में जाना है डिजाइनिंग वगैरह में, तो आप बेसिक फंडामेंटल यहाँ से सीख सकते हो। बाकी उनके ऑप्शंस वगैरह सेम होते हैं। मैम ये जो इसमें मूवीज बनती है ना, बहुत टाइम लगता है। ये आपको अलग अलग, सपोज आपने ये पिक्चर क्रिएट किया है, फिर ये पिक्चर को आपको मूव करना, ये सब उसमें बहुत ही टाइम लगता है। मैम कुछ भी थोड़ा मिस्टेक होगा तो पूरा फोटोशॉप में भी आप कर सकते हो। फोटोशॉप आपके सिलेबस में है आई गेस, नहीं 8th स्टैंडर्ड में है आपके सिलेबस में। लास्ट टू लास्ट ईयर था फोटोशॉप, उसमें भी आप जीआईएफ इमेज बना सकते हो। ठीक है, एक टॉपिक बाकी रहा हमारा, एडिंग साउंड टू बटन। तो वो मैं दूसरे कंप्यूटर में जा रही हूँ, बिकॉज कंप्यूटर में वो इंपोर्ट नहीं होने देगा साउंड। आपके कंप्यूटर में शायद ये साउंड वाला ऑप्शन वर्क करेगा, बिकॉज इसमें बहुत सारा डेटा नहीं होगा ना। लेट मी ओपन फ्लैश। इट्स टेकिंग टू मच टाइम। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, वो भी इसके रिलेवेंट ही है। यही सॉफ्टवेयर में हम उसमें वर्क करेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास कोई पुरानी फाइल पड़ी हो तो मैं वही ओपन कर रही हूँ। शायद इसमें इंपोर्ट नहीं होगा, बिकॉज आई ऑलरेडी यूज दिस। अच्छा, मैंने ऑलरेडी इसमें साउंड ऐड किया हुआ ही है। लेट मी चेक इट इज वर्किंग और नॉट। कंट्रोल एंटर। अच्छा, आपको नहीं सुनाई देगा। एबल टू सी दिस साउंड? Yes, ma'am, सुनाई दे रहा है। Hello? Are you able to see this sound? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Okay. तो वो मैंने कैसे किया था, that I'm explaining you. You have to take only like ringtone और alarm ringtone, ऐसा कुछ लेना है, short sound जिसका टाइमिंग लेस देन 1 मिनट हो, ringtone या फिर कुछ भी। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ ये साउंड, and then I'm repeating this. Simple, you have to go in file and then import to library, and we are going on this option, import to stage. Ma'am, this will work in laptop. 1 minute. हाँ जी बेटा। Ma'am, this will work in laptop. लैपटॉप हाँ करेगा ही ना। There is sound might be in download. Clicking in downloads, here one sound is there, alarm. I'm taking this sound। बहुत ही छोटी फाइल आपको यूज करनी है। See, type mp3 and wave. This is the extension of any sound, any songs, etc. I'm importing this and you are able to see this will appear here. One or more files were not imported because there were problem reading them. अच्छा, मैंने बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे ऐड की है तो ये नहीं होने दे रहा है। Let me create one more फाइल। ठीक है, मैं जल्दी से एक फाइल बना दे रही हूँ। राइटिंग हियर बटन। ठीक है, and selecting color yellow and this. Now I'm going in modify, convert the symbol. Acha, I have to select this first of all, this both, and then modify, convert this symbol. The symbol I'm converting in button and then giving OK. And here I am just clicking on this. Once I click on this, you can see 4 options are there. From this, I'm inserting some quick from there. Now I am adding one layer here by using insert layer. Once I click on this, you can see one layer is added. I am giving name of this sound.
SOUND. ठीक है? And I'm inserting keyframe in this timeline, right? Inserting keyframe, file, import to library, alarm. अच्छा, again ये नहीं होने दे रहा है. Import on stage. Let me try another sound. Acha, it's imported. Are you able to see here? I'm dragging that from there to here. Might be वो फाइल थोड़ी सी बड़ी थी इसलिए नहीं इंपोर्ट होने दे रहा था. Right? Then simple, you have to click on Control Enter. Once you click on this, if you click on this button event, then you are able to see this sound. Okay, understood? Any doubt in today's session? I know it's quite difficult because 6th standard में इनके related 2 chapters आपको आए थे, but आपने study नहीं किए थे. But if you do practice at home, then you are able to do this, right? Any doubt? No, Hello? ma'am. No, ma'am. Okay, steps are given in your textbook. You have to do practice at home. Okay? Okay. So bye. Have a nice day. Bye, ma'am. Ma'am, attendance. Bye. Bye. Attendance. Yes, I forgot to take attendance. Let me take attendance. 1 minute. Seventh A. Okay, send your five, 11, 12. Okay. जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अटेंड किया था क्लास एंड वो लेफ्ट हो गए हो तो उनका नेम भी बता दीजिए. 10. सुहानी सेरस्य. हाँ जी. नो, सुहानी विरमगामा. ओके. Priyanshu was not there, Ayan was not there, Manu was not there, Dhruv is not there, Soham Jiledi, yes, 9 roll number, okay. Okay, you can leave this meeting now. Okay, bye, have a good day.